Welcome to in our next lecture. In our previous lecture, we discussed about as per our syllabus in a monoclonidae family are completed. Now and already the dicot family in our syllabus, the 13 dicot family are completed in previous lectures, and so today we discuss about the monocot family. In this monocot family, we discuss about the family is a Cyperaceae family. First of all, systematic. According to Bentham and Hooker, we discuss about the systematic position. In this, the kingdom Plantae, division Spermatophyta, class Monocotyledons, series Glumaceae, and family Cyperaceae. So we discuss about systematic position characters. Kingdom Plantae in this autotrophic mode of nutrition because they have a chlorophyll, so they make a own food. Then the cell wall is made up of cellulose material, no locomotion, only movement occurrence of this plant. Then division Spermatophyta, they are produce a flower during their whole life cycle. Sex organ are multicellular. आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल टर्न इनटू सीड यानी कि सीड का फॉर्मेशन होता है. देन द एम्ब्रियो फॉर्मेशन अकर ऑल्सो एम्ब्रियो का भी फॉर्मेशन होता है. देन द क्लास इज अ मोनोकोटिलेडन्स, ओनली वन कोटिलेडन्स इज प्रेजेंट, सो इट इज नोन एज द मोनोकोटिलेडन्स. देन वेनेशन ऑन द लीफ इज अ पैरेलल यानी कि स्ट्रेट वेनेशन. फ्लावर आर जनरली ट्राइमेरस and the root is a fibrous root. It means the fiber-like arrangement and developing as a cluster from the base of stem. कि जो stem का base यानी कि lower portion होता है वहाँ cluster यानी कि एक से वधारे ज़्यादातर fiber-like structure arrange होके जो structure develop करते हैं उसे हम fibrous root कहते हैं. Then the series is a glumaceae. In this series the flower in an arrangement of the spikelet with a glumes, and the ovary is unilocular, and the series has a five family included. In this five family, today we discuss about the Cyperaceae family. Introduction. In this Cyperaceae family, the member of the family are distributed in a temperate region. It means they are developed in a not a very dry region and not a very wet region, but they are developed in a moderate region. Okay, in this some area there are dry condition, in some area are a wet condition. Then they mostly grow well in a humus soil, margin of the ponds and bank of the rivers. Okay, they are mostly developed on the humus soil, यानी कि जहाँ पे भेज वाली soil रहती है वहाँ उसका डेवलपमेंट होता है. देन द मार्जिन ऑफ पॉन्ड एंड बैंक ऑफ रिवर्स, के कोई भी तालाब और नदी है उसके किनारे यानी कि मार्जिन है उसके किनारे पर डेवलपमेंट मोस्ट ऑफ ये प्लांट होते हैं. देन इट कंप्राइज द 70 genera and 4000 species included in this family, but in the 4000 species the 441 species are occurring in our India. First vegetative character in this, first one is a habit. The plants are commonly perennial herb, but they are rarely annual and perennating by means of creeping rhizome or tuberous. It means कि जो Cyperaceae family है उसका plant most of perennial herb है. Perennial herb यानी कि they are survival for the several years. कि जो plant है वो एक साल नहीं live होता है पर वो सारे एक से ज़्यादातर ईयर है वो सर्वाइव करते हैं. देन दिस प्लांट यूजुअली बियर्स अ फ्लावर एंड फ्रूट एवरी ईयर. कि कोई भी प्लांट है वो हर एक ईयर में फ्लावर एंड फ्रूट નું फॉर्मेशन करते हैं. देन दे डू नॉट डाई आफ्टर द प्रोड्यूसिंग फ्लावर, कि आफ्टर फ्लावर और फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसके बाद वो प्लांट है वो डाई नहीं होता है, पर वो फर्दर उसकी लाइफ साइकिल है वो कंटिन्यू स्टार्ट यानी कि दे आर सर्वाइवल फॉर द सेवरल मेनी ईयर्स, सो इट इज नोन एज द perennial herb. And the annual herb, it means that the annual plant they complete their whole life cycle
फ्रॉम द सीड जर्मिनेशन टू सीड प्रोडक्शन इन अ सिंगल ईयर, कि जो प्लांट है वो 1 ईयर में सीड का फॉर्मेशन भी करते हैं और सीड को जर्मिनेशन भी कर दे, तो उसे हम क्या कहेंगे, एन्युअल। तो साइप्रस फैमिली में मोस्ट ऑफ द प्लांट है वो पेरेनियल है, एन्युअल है वो ज़्यादातर नहीं है। और उसका क्या है कि कीपिंग राइजोसोम और ट्यूबियरस, के उसके जो राइजोम है वो क्रीपिंग लाइक, यानी कि मोस्ट ऑफ उसका स्टेम है वो वीक स्टेम है, और दे आर राउंडेड but they are a rooting of this node and they are separated on this earth. Next, the root is a adventitious, fibrous, branch or tuberous. In this monocot, we identify this a root portion. Okay? In this dicot, the root are a taproot system, but in the monocot, they are arranged in either fibrous root or either adventitious roots. Adventitious root means कि the roots are developing from the any part of the plant except the radical, कि जो radical वाला पोर्शन होता है उसके एक्सेप्ट करके, उसके छोड़ के प्लांट के सारे भी पार्ट से वहाँ से जो रूट का डेवलपमेंट होता है तो उसे हम एडवांटेटिस रूट कहते हैं। देन द फाइब्रस रूट, तो फाइब्रस रूट है वो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है और डेवलपिंग इन अ क्लस्टर फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, कि जो स्टेम है उसका बेसल पोर्शन है वहाँ पे क्लस्टर, यानी कि एक से ज़्यादातर स्टेम है वो रूट है वो अटैच होकर एक क्लस्टर अरेंजमेंट और फाइबर लाइक अरेंजमेंट फॉर्मेशन करते हैं। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोनोकॉट प्लांट, कि मोनोकॉट प्लांट फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, कोई भी रूट प्लांट है उसका रूट फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो वो मोनोकॉट प्लांट की मेन कैरेक्टरिस्टिक है। देन द सेम इज अंडरग्राउंड राइजोम, ट्यूबर्स, aerial shoots without sticks into node and internode and usually unbranched, rarely branch near the tip, कि उसका स्टेम है उसमें राइजोम प्रेजेंट है, वो राइबर्स ट्यूबर लाइक उसके राइजोम में कई प्लांट में ट्यूबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, वो तो अंडरग्राउंड है कि सोइल के नीचे है। देन दे आर एरियल, इट मीन्स दे आर इरेक्ट शूट पोर्शन, देन द विदाउट डिस्टिंग इनटू नोड एंड इंटरनोड, के इसमें नोड और इंटरनोड वाला पोर्शन नहीं है, वो स्ट्रक्चर है वो सिंगली सर्कुलर स्ट्रक्चर है। देन द यूजुअली अनब्रांच एंड रेयरली ब्रांच नियर द टॉप, के मोस्ट ऑफ द स्टेम है वो अनब्रांच है, उसमें ब्रांच प्रेजेंट नहीं है, बट रेयरली प्लांट में ब्रांच प्रेजेंट है, बट जो भी प्लांट में ब्रांच प्रेजेंट है वो टिक पोर्शन में प्रेजेंट होती है। देन द लीव्स इज अ एक्सटिपुलेट, sessile, alternate, simple, lamina linear and the spirally edge, sharply edge, कि उसका leaves है उसमें stipulo absent है, so it is known as the exstipulate. Then the sessile, because in this arrangement the leaf are in this lower portion, not a peduncle are present, so it is known as the sessile. Then the alternate leaves, यानी कि they are arranged in a alternately. There are simple leaf, it means they are consist of only single leaf, lamina. The shape is a linear shape and the margin is a sharply edged margin. So you can see this in figure. The leaves are a simple leaf and sessile leaf. Then next one is a floral character. In this, the first one is a inflorescence. Inflorescence means the arrangement of the flower on the main axis. So they are mostly spike or spikelet or panicle structure and rarely solitary terminal. तो spike और spikelet, यानी कि spike means कि क्या होता है कि कोई भी फ्लावर है उसमें पेडंकल प्रेजेंट नहीं है, वो फ्लावर क्या हो गया, सेसल फ्लावर हो गए, और they are arranged in a acropetal, sorry, the flower are sessile and they arrange in acropetal succession on the main axis. It means कि जो younger flower होगा वो टिप वाला पोर्शन पे होगा और जो older flower होंगे वो बेस वाला पोर्शन पे होंगे, और the small spike with one or more few floret enclosed in this ब्रैक के अंदर है वो enclose होते हैं. Then there are arrangement of the spike or a spikelet. In this figure you can see this is a figure of the spikelet arrangement. Then the next is a panicle. Panicle is a type of the compound racemose. In this, the main axis is a branch and the flower are arranged or flower are borne in acropetal succession. In this, only
branch. So it is known as the panicle, and they are rarely the solitary terminal. It means they are terminate into exile solitary, यानी कि single portion. Then the flower is a sessile, bracted, zygomorphic, hermaphrodite और unisexual and hypogynous. के फ्लावर है उसमें लीफ में जैसे पेडंकल नहीं प्रेजेंट, ऐसे वैसे ही फ्लावर में पेडंकल नहीं है, तो उसे नॉन एज इट इज नोन एज द sessile. Then bract present because in the spikelet arrangement the spike with one or few floret enclosed in a bract. So bract are present, it is known as the bracted. Then the zygomorphic, it means the symmetrical are not equally. Hermaphrodite, it means bisexual, or some one plant is a unisexual. Then hypogynous, it means the ovary is a superior. Then the perianth, in this the calyx and corolla do not merge with the different size or type and color, so they are fused together, they known as the perianth, but usually absent in the some species represented by the hair and scalp. के अमुक स्पीसीज है उसमें क्या होगा कि पेरियंथ यानी कि टेपल्स है वो एब्सेंट होगा, बट दे आर कन्वर्टेड इनटू हेयर एंड स्केल लाइक स्ट्रक्चर. बट in Arboreous plant they consist of the 6 tepal, and these 6 tepal are arranged in a 2 wall of 3 each. के एक वॉल है उसमें 3 tepals अरेंजमेंट है, और जो सेकेंड वॉल है उसमें भी 3 अरेंजमेंट होते हैं. Then the androecium, so the androecium in this the stamen usually 3, maybe 1 to 6 or 1 in a hemicarpa. Then polyandrous, anthera, diaticus and basifix. मोस्ट ऑफली स्टेमन है वो 3 नंबर में है, and they are variable into 1 to 6 in number, but in hemicarpa genus they are arranged in only one androecium, यानी कि one stamen. They are polyandrous, mean they are not fused together. The anthera, diaticus means they are a two-lobe structure, and basifix means the filament and lobe they are attached on the basal portion. Then a gynoecium, so in this they are a variable for the bicarpellary and tricarpellary. In the rhynchospora they are bicarpellary, and means 2 carpel present, and in this carex they are tricarpellary, means they are 3 carpel present. Syncarpus, it means the ovary fused together. Then ovary is a superior, it means they are arrangement on the above of the tepals. Then a unilocular, it means they are only one chamber are present. The ovule is a anatropous type, and the basal placentation, it means the ovule arrangement arrays on the basal portion, and most ofly the fruit is a HK type. So in this floral character we write down the floral formula. So in this the first of all is a bract are present, then the flower is a zygomorphic, but in this Cyperus rotundus they are actinomorphic. Then bisexual, male and female both are present. Then the petals are, it means tepals are absent, यानी कि 0. Then androecium, anther is a 3, they are polyandrous, so they are not write down in the bracket. Then the gynoecium is a tricarpellary, they are syncarpous, यानी कि fused together, and they have a superior ovary. So this is a floral diagram, floral formula. On this floral formula we show the floral diagram. This is the sign of the bract, then the actinomorphic, then male and female, यानी कि androecium and gynoecium both are present, tepals absent है. Then the anther are 3 in number, 1, 2 and 3, they are polyandrous, mean not are fused together. Then the ovary is a tricarpellary, they are tricarpellary but unilocular, and they have a superior. So this is the floral formula and floral diagram of the Cyperus rotundans. Then the next example is a Scirpus articulatus. They are same to the Cyperus rotundus, but there are a difference between कि साइप्रस वाला प्लांट है वो एक्टिनोमॉर्फिक है, ये प्लांट है वो जाइगोमॉर्फिक. फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस द ब्रैक्ट आर प्रेजेंट, सो दे आर द ब्रैक्ट, देन अ zygomorphic, then a bisexual, it means androecium, gynoecium present, tepals absent है, anther है वो 3 number, 1, 2 and 3. Then the gynoecium यानी कि ovary tricarpellary, unilocular, and they are syncarpous or superior. So underline is the below portion. So this is a floral formula and floral diagram of this Scirpus articulata, and the inflorescence is a spikelet type. There are some
Common example of the Cyperaceae family, the Cyperus rotundus. Their habitat is mostly of the margin of the rivers and ponds. Then the Cyperus hespen. Thank you.